Azhar and as Prabhakar, where Prabhakar played a very main, like his role was very essential in the early 90s. That he was really an important part of the opening that India had. Manoj Prabhakar was a very big opener and a mid-arm fast bowler. So I'm really happy that such kind of people are coming in DPL, and DPL is going to get better and more better. And this is gully cricket. This is a different format. This is with Masti. This is with more excitement. That is what's happening. Currently, does it bring the memories of Azhar back to you, and how does it feel to be at Queen's Premier? First of all, it brings a lot of memories for sure. It would have brought in a lot of memories when you would have given me my own team, but maybe in the future. But more importantly, the cause that you guys support as well, is absolutely incredible. That's the first reason. The fact that you guys help the people who really require your help for, you know, uh, boosting their careers, and the NGOs that you support. So for that as well, and DPL is a lot of fun. I mean, anyone. I'm from Mumbai, so anyone who actually plays gully cricket has started with a underarm cricket session at their backyards in the gullies. So yeah, I'm actually a gully boy. So I'm very very happy to be here, and brings in a lot of memories from Azhar as well. Yes. The film Clank is due to release. Yes. What do you have to say about that? I'm absolutely excited. This is the second time around I'm going to be doing full-fledged action. So all the PUBG fans will get to see me using all their guns. Everything is going to be full gloried, and it's actually going to be very, very real. We've used, we're trying to be as authentic as possible with this film. As you see, the trailer has been going viral. So I'm just hoping people appreciate Sunny Deol's performance, because he's playing what a Paul Newman would play. So hats off to that. I think he definitely deserves that. Karan Kapadia is in it as well. He's a fantastic actor as well. So we are super excited. Getting to know spots where people are applauding for the kind of work that you're doing, bringing out especially being in Bangalore, the heart of Bombay. Currently, is also a Bangalore boy, I Yeah. guess. How does it feel? Well, Parul, of course, I'm very excited, very thrilled, and also a little bit upset that DPL is coming to closer to its end days. Someone asked you. Because I've already started working on season two, and now my aim is not these 3 weekends which is left. Now my aim is January 2020, where we kick off the season two. And yesterday I was just at Land's End, and I was just waiting for my car. Three people just randomly they came into me. And they said, "We have come to DPL." I said, "Yeah," and randomly, my car took about 15 minutes to come. So like people have seen my face, they have come here. So they just randomly came up to me, well, excuse me, you the owner of DPL? I said, yes. Well, we have come there. We've seen you on TV. So it is exciting that people are, Acknowledging, yes, they are absolutely. knowledgeable about DPL and is getting awareness. Being a Bangalore boy, Yes. it has been part of growing up there. Yes. What kind of memories when it comes to cricket, especially gully cricket? Uh, See, I've damaged a lot of properties for sure, you know. So all the realtors will be very, very away from me when I play cricket, because that's one of the fun parts about it. The first time I played with a season ball, I remember. Um, so I remember that season ball was one of the signed season ball of Sunil Gavaskar. So the first time and the last time I played it, because it was actually my dad's gift, what my dad got from Gavaskar. So that was a very, very fond memory of mine. This is if there's an incident of a ball about 3 years ago. I was watching IPL Mumbai versus Chennai, and we were just behind the dugout, and Jaunty Rose was sitting in the dugout. People were shouting Jaunty, Jaunty. My son was sitting with me. It was just like he he had a ball in his hand. He just signed that ball, and he called my son ahead, and he gave that ball to my son. And that ball literally for 45 minutes it circulated in the whole of the
section where we were sitting and everybody were like taking selfies and posing with the ball. And my son was after them that they will not take the ball and run away. How sweet, how sweet. On a concluding note, I love the energy that you can hear it over here. I love what you've done with this, the gully cricket, everything is so authentic, and I think that's what cricket should be. It should not be, of course, it has to be glamorized to a little sense because Bollywood and cricket goes hand in hand. But the true gut feeling of mine right now is that I feel I'm at home right now. So thank you so much for that. वासिफ सर, आपको कैसा लग रहा है? आपको इतना वार्म अप्रिसिएशन मिल रहा है, सबसे सेलिब्रिटीज आर कमिंग एंड अप्रिसिएटिंग, तो आपको कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब DPL जहाँ से शुरू हुआ था 2 साल पहले उसका सोचा था मैंने, और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ टेकन अ वेरी गुड स्टेप। एंड जिसपे ये ड्रीम्स प्रीमियर लीग ऐसी लीग है जिसमें उसका नाम ही ड्रीम्स प्रीमियर लीग रखा हूँ मैंने, क्योंकि इन लोगों के सपने पूरे करती है, जिसमें 60% प्लेयर्स हैं जो एक्चुअल महाराष्ट्र लेवल पे अंडर आर्म खेलते हैं और जिनका रोज़ी रोटी इससे चलती है, और वो लोग हर गेम का मतलब 2000, 2500, 3000 उस हिसाब से लेते हैं। और आज उनका सपना पूरा हुआ है कि वो लोग लाइव टीवी पे आ रहे हैं, ये डी स्पोर्ट्स पे आ रहा है, जो इस वक्त 3 कंट्री में देखा जा रहा है, इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। दिस इज़ वेरी नाइस एंड एक्साइटिंग टू मी। अंशुमन मैम, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? गली क्रिकेट लाइव आ रहा है टीवी पर, तो आपको इस टाइम के बारे में क्या लगता है? मैंने एक्चुअली बचपन से ही हमेशा मैच जो है वो टीवी पे देखा है, सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग दिस एंड आई एम एंजॉइंग, दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी, सो आई एम हैविंग वंडरफुल टाइम हियर एंड आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर वासिफ Pashimam. He invited me here and gave me the opportunity to see the match, so I'm very happy. Thank you. Oh wow, that was wonderful actually. मुझे लगा था कि मैं तो एक भी बॉल को टच नहीं कर सकूँगी, बट when I played it was wonderful, enjoyable. आपको अभी ये खेलने के बाद क्या लगता है? वुमेन्स टीम होनी चाहिए DPL में या नहीं? Oh yes, I'll be the first one in that. Definitely I would like to know that if humans will play the match, it will be more beautiful to watch and enjoy. Yes. कोई एक्सपीरियंस क्रिकेट से रिलेटेड? देखिए, मेरा नाम AM दुराज है, मैं एक लिरिसिस्ट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आसिफ पशिमाम जी को थैंक्स करना चाहूँगा कि हमें यहाँ बुलाया, और दूसरा मैं उनसे ये कहूँगा कि फ़ीमेल के लिए भी आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे जो क्रिकेट खेलना चाहती है फीमेल्स वो करें। और आपके स्टाइल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा देख के, आपने चश्मा पीछे लगाया हुआ दबंग स्टाइल में, तो उससे समझ में आता है कि ये कितना दबंग खेल हो रहा है। और क्रिकेट के बारे में इतना ही कहूँगा कि मैं क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ, और मैं अगर लिरिसिस्ट नहीं होता तो मुझे लगता है मैं भी क्रिकेटर होता, तो बस मैं यहाँ आ गया, मैं भी यहाँ खेल रहा हूँ फिल्मों में। तो बाकी बहुत अच्छा लगा, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और छोटे छोटे प्लेयर या जो छोटे प्लेटफॉर्म पे खेलते थे उनको बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, और वो जो है वो टेलीकास्ट हो रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगेन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। प्लस अभी जो इनिशिएटिव है ये बच्चियों के लिए होने वाला है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, बहुत अच्छी बात है, इस तरह के जितने भी इवेंट्स हैं जो किसी के भले के लिए होते हैं, NGO जो हैं जितने भी दुनिया के, वो किसी की अच्छाई के लिए काम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हम सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए, और ताकि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद हो सके। सर यहाँ पे आइए ना थोड़ा। Mr. Wasif, we're getting musical now. The Dreams Premier League is getting musical with Aman being here. What do you have to say? Yes, yesterday we had choreographers here, and today we have got music people here. So it's nice. I would request him to sing something and make a nice jingle for DPL. And to hit the youth, because this is gully cricket, and it is good for people that upcoming children and upcoming people who really interested in gully cricket. Our music is healing, of course, and with so much of stress with cricket around, it's a good break. I must say. Aman, what's been your experience with Dreams Premier League being
for today. Yeah. How is it? What do you have to say? And what are your shining memories? See, first of all, many heartiest congratulations to Mr. Wasib एंड बहुत बहुत मुबारक हो सर, क्योंकि मेरा तो बचपन से ही सपना था अगर मैं सिंगर नहीं होता तो शायद क्रिकेटर ही होता, क्योंकि दिल्ली में मैं पला बड़ा हूँ तो वहाँ के बड़े बड़े ग्राउंड्स में हम लोग सुबह से ही शुरू हो जाते थे अपनी समर वेकेशंस में। सुबह 5 से लेके शाम तक, जब तक 5-6 बजे तक जो है सूरज ढल नहीं जाता है, तो हम लोग खेलते रहते थे। और अभी राइट नाउ ऑल्सो आई वॉज सिटिंग बाय द साइड लाइन्स, आई वॉज वॉचिंग द गेम, सो आई वॉज सो रेयरिंग एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। आई इवन आस्क्ड पारुल दैट if I can just join in the middle and go out there and play a few strokes, field a little balls. But yeah, so it's always great when you see so many talented people, and when you get that platform, when you get that humongous amount of opportunities in the form of DPL, I must really congratulate and all my bestest wishes to Mr. Wasib and Dreams Premier League to keep up this great work, because you don't get often this kind of a medium to express your talent, to express your sporting abilities. And अंडरआर्म क्रिकेट तो बॉम्बे में सबसे ज़्यादा मशहूर है, मैं समझता हूँ पूरे इंडिया में। अगर आप देखें तो बॉम्बे एक ऐसी शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अंडरआर्म क्रिकेट खेला जाता है। मैं जब दिल्ली से बॉम्बे आया था तो मुझे लगा था कि यार यहाँ पे लोग ओवरआर्म क्यों नहीं खेलते, तो जगह की किल्लत की वजह से बॉम्बे इज़ सो कंजस्टेड एंड छोटी छोटी गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं, छोटे छोटे ग्राउंड्स हैं, ऐसे जो स्पोर्टिंग फील्ड्स हैं, ग्राउंड्स हैं जहाँ पे आप अंडर आर्म खेल सकते हैं। आप 2D 1D 3D और 1 टिप आउट और ये सब जब टर्मिनोलॉजीज आप सुनते हैं तो बहुत मज़ा आता है। सो या आज ये और भी स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इट्स बीइंग टेलीकास्टेड ऑन डी स्पोर्ट ऑन सच अ बिग चैनल, एंड इट्स बीइंग टेलीकास्टेड नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस सो मैनी subcontinental countries. So again I wish all the luck and all my love to DPL, एंड दिन दुगनी रात चौगुनी ये तरक्की और करे। और अगले साल क्यों, मैं अगर कल आके वापस से खेल सकता हूँ, नॉट एज अ चीफ गेस्ट बट एज अ प्लेयर। 30th we are having an exhibition match. अच्छा, We are in talks, like we are going to